Hi guys, let's start with postmodernism. Postmodernism जो concept है, this challenges the concept of modernity. Challenges, okay? So not postmodernist. Edward Said and ईशा बर्लिन. ये सब मेरा कुछ नोट्स लिखा हुआ है. फ्रेडरिक नीत्शे, मार्टिन हेडगर. तो इंट्रोडक्शन देखते हैं. Postmodernism emerged in the late 20th century as a sharp reaction against the negative consequences of modernity. ये लाइन बोलना है कि क्या है पोस्टमॉडर्निज्म इमर्जेस लेट 20th century is a sharp reaction against the negative consequences of modernity as similar to those Buddhism and Jainism which emerges as against to Hinduism. ठीक है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे जाएंगे. पोस्टमॉडर्निज्म challenges some basic assumption of modernity. First emerged in the field of art and literature and later on in the other discipline. तो सबसे पहले आर्ट लिटरेचर में अपना जगह बनाता है, फिर अदर डिसिप्लिन में एंटर करता है. They reject the idea that there is a single meaning of truth. There is a single meaning of truth. It is subscribes to the idea that there are multiple truth, multiverse a concept, multi-universe, multiple realities. There is no objective reality. एक रियलिटी नहीं है. रिजेक्ट द आइडिया ऑफ मेटा नैरेटिव. बहुत बड़ा जो नैरेटिव बना के रहता है, ये ऐसे होगा तो ऐसे होगा. फ्रॉम पोस्ट मॉडर्निज्म फर्स्ट यूज बाय जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड इज द बेसिक इन हिज बुक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979. ठीक है. अब जो लियोटार्ड है, इनका एक लाइन लिखा हुआ है, इट्स इनक्रेडिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव. इनक्रेडिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव. इट सिंपली मींस दैट डिसबिलीफ इन एनी ग्रैंड थ्योरी. मतलब कि किसी भी बड़ा सा नैरेटिव में विश्वास करना. जैसे कोई बड़ा राजा है तो कृष्ण ही सब कुछ, मतलब समझ रहे हैं आप. तो बहुत बड़ा जो नैरेटिव बना दिया गया, ग्रैंड थ्योरी बना दिया गया, तो उसके अगेंस्ट में थे. तो फ्रेडरिक निश्चे इज जैसे राम एज अ गॉड, इट्स अ मेटा नैरेटिव, ही इज अ गॉड. सम बिलीफ, नया जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर है वो बिलीव करते हैं, तो बेस्ड ऑन एविडेंस ये वो, तो राम वाज ओनली अ किंग ऑफ सम किंगडम, सो दे डिड नॉट एट्रीब्यूट और गिव सम प्लेसेस लाइक गॉड. तो ये अलग चीज है. तो फ्रेडरिक निश्चे जो है, उन्होंने दिया जो निश्चय है, निश्चय इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्निज्म. और बहुत रिवोल्यूशनरी इनका कॉन्सेप्ट है. लोग अगर समझने लगे तो जो जैसे कि हम लोग लाइफ में जी रहे हैं बेस्ड ऑन रिलीजन, हम लोग को ऐसे रहना है, पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा सोसाइटी का. पूरा सोसाइटी का नैरेटिव चेंज हो जाएगा अगर पोस्ट मॉडर्निज्म निश्चय को अगर आदमी अपना समझने लगे. तो जो जितना इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, पैट्रियार्की, फैमिली, ये वो सब धीरे धीरे सब पे क्वेश्चन उठने लगेगा. सो निश्चय इज लाइक Superman. He does not believe in God, not believe in the creation of God. Whole earth is created. This is meta narrative, and he totally rejects that. तो central argument of postmodernism पे आते हैं. तो it advocated a belief that there is no universal truth, there is no objective reality, only plurality of perspective. There is no genuine distinction between right and wrong, only expressions of power relations. It rejects the idea that meta-narrative incredulity towards meta-narrative. It also does not have faith in science and technology as instrument of human progress, as they have brought destructions to human life, like 2 world wars. ठीक है, साइंस एंड टेक मतलब कुछ अच्छा नहीं किया है, हम लोग साथ गलती किया है. ये रूसो का भी कॉन्सेप्ट यही था. It was against the development of science and tech. The reason and logic are not universally valid and have meaning and validity is an established intellectual tradition. Now, let's compare modernism versus postmodernism. Started from the time of 18th Enlightenment in the 17th century or evolved in late 20th century. So this is the concept of 20th century. This is the concept of 17th century. Now, knowledge as objective reality. ठीक है, objective, single objective reality. And modernity has constructed meta narrative. Believes in the authority of science. जो साइंस का वही सत्य है. Modernity stands for universalism. It applies to everywhere, every single nook and corner of the world. Modernity stands for freedom. Okay, believes in the transcendental truth. Modernity is foundationalist. अब आते हैं हम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है. तो इसको चैलेंज करेगा, सपोर्ट द लोकल नैरेटिव और मल्टीपल नैरेटिव, बिलीफ इन द ऑथोरिटी ऑफ वन एनी मोड ऑफ नॉलेज. पोस्ट मॉडर्निज्म बिलीव इन डाइवर्सिटी, believes in freedom,
Billis has their own truth, एंटी फाउंडेशनिस्ट, तो ये सब चीज हो गया. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्सेप्ट दिया गया था इन बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी, जो कि बुक 1967 में लिखा गया है, द बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी. और ये लिटरेरी थ्योरी है, कैन चैलेंज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट एंड मीनिंग दैट वाज डेवलप्ड इन वेस्टर्न, और वी कैन से इन मॉडर्न फिलोसफी. So according to Derrida, particular text may have multiple meanings. It rejects the binary interpretation of world developed by Western philosophy like white, black, masculine, feminine, cause and effect, right and wrong, good and bad, etc. It is also always possible that the other person receives exactly what is being communicated. ठीक है, ये तो बोलते लैंग्वेज डेवलप नहीं हुआ अभी तक समझाने के लिए. Hence it challenges the definitive interpretation of the text. He suggests double reading, read between the lines. Now productive differences. Deleuze used the principle of productive difference against the model thought given by Immanuel Kant, Hegel, and this Kant and Hegel both use the concept of reason in their philosophy to achieve final objective of their political philosophy. By dialectics, Hegel tried to phase out the differences and contradiction available in the idea to achieve the absolute idea. According to postmodernism, differences and contradiction in thought are productive. Deleuze declares that difference is thinkable only as repetition, repeating itself, where differences affirms itself in eternally differing from itself. Its movement is productive, but without logical opposition, negation, or necessity. Now, important thinkers and books. Lyotard, a French political philosopher, he is the first person to explicitly mention the term postmodernism in the book Postmodern Condition, a report on knowledge. He describes postmodernism as incredulity towards meta narrative, and Lyotard supports local narrative. नाउ डेरिडा पे आते हैं. इज अ फ्रेंच फिलोसोफर. क्या है डेरिडा? क्या है? फ्रेंच फिलोसोफर है. डेवलप फॉर्म ऑफ सेमियोटिक एनालिसिस नोन एज डीकंस्ट्रक्शन व्हिच ही डिस्कस्ड इन न्यूमरस टेक्स्ट एंड डेवलप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेनोमेनोलॉजी. इंपॉर्टेंट जो बुक है, राइटिंग एंड डिफरेंसेस 1967 का, मार्जिन्स ऑफ फिलोसफी 1972, स्पेक्टर ऑफ मार्क्स 1993, डीकंस्ट्रक्शन इन अ नटसेल 1997. निश्चय पे आते हैं. निश्चय पे आते हैं. जर्मन फिलोसोफर, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मोस्ट postmodernism. He held that God is dead, which means morality is dead. There is no ultimate truth. He also propounded the concept of will to power. Will to power in man is stronger than any other will, including the will to live. Will to power is the reason behind any action. He also gave the concept of Superman, which means the power to challenge conventional morality and to lead according to own choice. He was a nihilist, doesn't believe in any God, and hence rejected traditional religious and philosophical thought. Important books are Beyond Good and Evil, On the Genealogy of Morals, Thus Spoke Zarathustra, 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 The Antichrist, 1888. So he's a 19th century philosopher. Now, Paul Girald, French philosopher, for him, the postmodern world is hyper-reality. Uh, put forward the notion of symbolic exchange as an alternative to economic exchange. According to him, postmodern society becomes self-referential and characterized by simulation and simulacra, which are the representatives of any aspect of consumption. He held that the media led our society to undergo a catastrophic revolution that has led to the death of social society. His important books are The Shadow of Silent Majorities, Simulacra and the Simulation, Symbolic Exchange and Death, The Illusion and the End. Now, Michael Foucault, French philosopher, he was influenced by Friedrich Nietzsche. He was concerned with forms of knowledge and analysis of different branches of knowledge. So, Michael Foucault rejected the Enlightenment project of humanism, the human self as an independent entity, and he was against structuralism and liberal humanism. So, Foucault is very important. He was influenced by Nietzsche, and he was concerned with the forms of knowledge and analysis of different branches of knowledge. He rejected Enlightenment of project of humanism, the human self as independent entity, and he was against structuralism and liberal humanism. Michael Foucault called his methodology archaeology and genealogy. His famous concept is discourse. बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है. डिस्कोर्स इज द वे ऑफ टेलिंग रियलिटी रादर देन टेलिंग रियलिटी. ठीक है, वे ऑफ टेलिंग द रियलिटी. फोकस करते हैं वे पे, तरीका.
Discourse. Every age had its own discourse. The discourse which is accepted by majority becomes the dominant discourse. He held that we do not discover the truth, we construct the truth. His conception of power is enmeshed in knowledge. For him, knowledge is power. He has given concepts like disciplinary power, governmentality, and biopower. So, the birth of the clinic, madness and civilization, and discipline and punish, the history of sexuality. So, we will see ये 10 साल के डिकेड में ये लोग इनका सारा बुक आएगा 63 से लेके यानी 60 से लेके 80 के बीच में इनका बुक है 1960 से लेके 80 के बीच में इनका बुक है तो एक बुक 1975 में है एक 1976 में है 1969 में 1963 तो ये ब्रेकअप बोलने के चलते हम लोग अब थोड़ा नैरो माइंडेड हो जाएंगे और मतलब नैरोली थिंक करेंगे कि हाँ इस बॉक्स के अंदर ही सोचना है इनकी बुक का टाइम पीरियड क्या है तो 1960 से लेकर 80 के बीच में है अगर ऑप्शन में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लाइक 1857 1860 तो सबसे पहले विल टोटली रिजेक्ट दैट एंड 1960 टू 1980 के बीच में हम लोग बुक लोकेट करेंगे 63 हो गया 69 हो गया तो 39 यहाँ पे 3 का डिविजिबल वाला बुक है और यहाँ 7 पे डिविजिबल भी 7 डिविजिबल है 76 है तो ऐसे कर करके हम लोगों ने बुक का इनका लोकेट कर लिया कि ये किस अराउंड बुक लिखा है इन्होंने नाउ मार्टिन हेड हेडेगर ने जर्मन फिलोसफर है ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म is known as the creating the concept of existentialism phenomenology. In contrast, the ideology that promote the one universal reality. Existentialist phenomenology suggests that we generate our own truth from within. He held that humans could escape from the dominance of technology by developing more open relationship with living beings. बुक का नाम है बिंग एंड टाइम 1927 पर इतना लोग फ्री नहीं है जैसे सपोज करिए मैं अभी ये जैसे वीडियो बना रहा हूँ So I am being alone and I am creating my own truth. I am reading the books and doing whatever discussion with the virtual world. But I could have other people, but same situation is going with those people as well. So we are creating our own truth. We held that human could escape the dominance of technology by developing more and more open relationship with living beings, but we are interacting less with living beings and giving time ourselves more. Now, Ricard Rotary is the U.S. philosopher, content as contemporary analytic philosophy incorrectly imitates scientific methodology. He concluded that philosophy should be seen as nothing more than discourse, rejecting the assumption that there is an objective. Now, important book is Philosophy and the Mirror of Nature. Consequences of Pragmatism and Contingency, Irony, Solidarity. Now Deleuze पे आते हैं French philosopher interested in pluralism, openness to other, aware and interactively, where he considered philosophy as a philosophy of pluralism. Thus, he criticized the identity and one's philosophy and congruence in favor of philosophy and congruence. He was interested in finding philosophy in his book Difference and Reputation and talked about the pluralism in the context of differences. Pluralism is well known as the opposite of philosophy of identity. Important books Differences and Reputation and Nietzsche and Philosophy. थिंकर्स एंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं माइकल फूको का कॉन्सेप्ट है डिस्कोर्स डेरिडा का है डीकंस्ट्रक्शन निश्चय का है विल टू पावर एंड सुपरमैन मार्टिन हेडगर का है एग्जिस्टेंशियल फेनोमेनोलॉजी जीन बॉड्रिलार्ड का है हाइपर रियलिटी सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड सिमुलेशन एंड सिमुलकारा तो इसको 2 बार और हम लोग अभी बोलते हैं रिवाइज करते हैं फिर से माइकल फूको का बुक है डिस्कोर्स डेरिडा का बुक है डीकंस्ट्रक्शन निश्चय का है विल टू पावर एंड सुपरमैन Heidegger का existential phenomenology. This is very important. We create our own truth. See, we create our own truth. Baudrillard का hyperreality, symbolic exchange, and simulation and simulacra. So, towards the feminist theory of state, Catherine McNeil का book है. Towards the feminist theory of state. So, I will continue with another. Thank you.